Okay, so time today's date is February 24th, and time in India is 8:31 a.m. Okay, Nanded blast में court rejects former RSS man's request. RSS man's request to give witness against VHP leader. On 17th January, the Nanded District Court rejected a former RSS member's application requesting he be made a witness in an ongoing trial pertaining to the 2006 Nanded bomb blast. Yashwant Shinde, sorry, Yashwant Shinde, the former RSS man, had earlier argued before the court that he had personal knowledge of the conspiracy that led to the blast, which was hatched by RSS, VHP, and Bajrang Dal. Shinde also accused Milind Parande, the current General Secretary of the Vishwa Hindu Parishad, of masterminding the blast and requested that he be added as an accused. On since 29th August, Shinde has appeared before the court on 5 hearings. The dismissal of Shinde's application weakens the investigation into a larger conspiracy behind several blasts. Interestingly, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये यशवंत शिंदे has said that he wants to be part of the investigation of 2006 Malegaon blast, 2007 Samjhota blast, 2007 Ajmer Sharif blast, 2007 Mecca Masjid Hyderabad blast, 2008 Malegaon blast, and also इसके साथ राकेश दवांडे, an accused in 2008 Malegaon blast, is also accused in the Nanded case. So, Nanded Court ne has dismissed the Shinde's application on the same grounds as the prosecution has previously suggested. As the Nanded blast had linked with several other blasts during the mid 2000s, the CBI had been prosecuting the cases, agency in the cases. CBI ने बोला है कि we don't need additional witnesses. I think जो भी witnesses अभी है, they are more than enough for us to take up the case and work on it. बोल के CBI ने to add a new person as an additional witness को CBI said no, and इसको नांदेड़ की district court ने said okay, as CBI is saying it's okay, we will not take it up बोल रहा है. So BJP very interesting चीज ये है कि BJP is pushing for thousands of voters to be deleted in Muslim dominated Bengaluru area, it seems. A row started with a private complaint filed by BJP sympathizers listing out 26,000 voters. How a private group came into possession of this list is still a mystery. Hundreds of voters, particularly Muslims and Dalits in Bengaluru, Shivajinagar constituency, could lose their spot on the voters list, with the election commission initiating action against them on the basis of the contentious complaint by activists of Bharatiya Janata Party. The complaint, which the opposition has described as malicious and communally motivated, was filed in October last year and alleged that 26,000 fake voters had been identified as either shifted out or dead in the constituency. Election authorities sprang to action in January this year, even as the final voters list was being prepared, and started issuing notices to 9,159 voters. The move is being seen as a violation of the standard operating procedures laid by the Election Commission of India on September 13, 2021, which said that suo motu deletions cannot be made in the 6 months prior to term of the assembly ending. The Karnataka assembly term ends in the last week of May. The SOP is prescribed in order to avoid last minute chaos in the lead up to the voting, as such confusion could erode voters' faith in the legitimacy of the exercise. But in case of Shivajinagar, the ECI has sought to justify its actions by invoking a clause which said that deletions can be done under special circumstances. How is a complaint filed by a political party, that too with en masse names, a special circumstances? Asked MG Devasahayam, retired IAS officer and chairman of the NGO People First, is asking that. Shivajinagar, which is the heart of Bengaluru, has over 1.191 lakh voters, 40% of whom are Muslims. The constituency has been represented by Congress MLA since 2008.
The controversy started with a private complaint filed by the BJP sympathizers in October 2022, listing out 26,000 voters. How the private group got the position of this list is still a mystery. According to MG Devasahayam, it is looking as if the election commission is working in cohorts with the BJP in creating this kind of list. A month after the complaint was filed, uh, an investigation that the private agency named Chulume with links to the BJP had been collecting voter data illegally from many constituencies, including Shivajinagar. Following the news minutes expose, which created a major political storm, the ECA ordered 100% check of all deletions and additions to the electoral rolls in Shivaji. After doing the 100% check, ECI did not release its investigations but just said that it is going to close the investigation now and it is going to delete the people who are there in that list. The findings of our investigation has also led observers to suspect that the list of 26,000 names forwarded to the ECI was compiled by Chelume. और इसके बारे में और क्या बोलूं यार, it's so shameful to talk about it. It is really shameful to talk about it. Uh, um, the entire saga of BBC India offices being surveyed by the Income Tax Department along with government's justification for the survey doesn't stand legal scrutiny. In the raids last week at the offices of BBC in Mumbai and Delhi, officially a survey under the Income Tax Act 1961 provided further proof that the ruling dispensation at the center has an abysmally low tolerance for anything that portrays it in less than flattering light, but tolerance usually runs low in places where sustenance of a regime is dependent. Uh, um, why would the survey have happened if BBC had not released its two-part documentary on the role of Prime Minister and his party in the systematic otherization of Indian Muslims? The answer is obvious, and it was equally so when the same or similar exercise was conducted against NewsClick, News Laundry, and Dainik Bhaskar in 2021. They all performed their jobs in the ways that irked their power, and all got surveys from IT department under the same act of 1961. Very interesting. So Gorkha land के West Bengal में fresh movement for Gorkha land is brewing in Darjeeling ahead of 2024 polls. Grocery purchases return to growth aisle after 5 quarters of decline, it seems, in India. New telecom bill aiming to regulate streaming and texting apps to be tabled in monsoon season. Yeah, telecom bill is not looking good. Everybody should read about it. Automakers hit domestic value calculation speed bump on way to 25,938 crore PLI benefits. फॉर्मर आरबीआई गवर्नर सुब्बा राव बोल रहे हैं कि not sufficient emphasis on jobs in financial year 24 budget. Says that there was not sufficient emphasis on jobs in the budget for 2023-2024 and it failed to grapple with the unemployment problem head on, except to believe that growth itself would generate jobs. R. Subbarao noted that the unemployment problem was quite bad even before the COVID and it has become an alarming as a result of the pandemic. I was disappointed that there was not sufficient emphasis on the job. Mere growth will not do. It will not create more jobs. We need job intensive growth. Former RBI governor was asked what was his biggest disappointment with the budget. According to Subbarao, roughly a million people join the labor force every month, and India is not able to create even half as many jobs. That is his biggest disappointment with the budget, it seems. Amit Shah is telling something in Karnataka, appealing for another term for BJP in Karnataka. बोल रहा है कि
Keep faith in Modi. Amit Shah is saying that all problems will be solved. India is all set to sign up for 3 Predator drones, it seems. It is in talks with them, with the US company. इंडिया कैन ऑफर वीट टू पाकिस्तान, आरएसएस बोल रही है। अभी के लिए इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं चल रहा है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर व्हाट इज हिज नेम, ईएएम जयशंकर, इंडिया अभी तक ने कुछ डिसीजन नहीं लिया, बट आरएसएस ने तो हाँ बोल दिया। बड़ा दिल दिखाते हुए इंडिया कैन ऑफर वीट टू पाकिस्तान, इट सीम्स। Assets worth 26,000 crores have been monetized in 2023. Financial year 2023, I mean, Niti Aayog ne bola. This takes the total monetization value realized in 2022 and 2023 to 1.14 lakh crore, which is 19% of the target of 6 lakh crore set under the national monetization pipeline over the 4-year period from financial year 22 to 25, with 88,000 crores achieved in financial year 2022. The government has monetized assets worth 26,000 crores during financial year 23 against the target of 1.6 crore for the current fiscal under proposal. ये एक आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स में, मुझे पूरा डेट ओपन नहीं हो रहा है। इफ एनीबडी कैन सी दैट वन, प्लीज डू शेयर विद दैट। इन्फ्लेशन एंड सीएडी वरीज टू ईज इन फाइनेंशियल ईयर 2024। फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक रिपोर्ट आया है। Natural gas consumption is up in January in India, it seems. India's exports may see tepid growth in 2023. Half of Indian firms may offer double-digit salary hikes in 2023. El Nino risk for inflation farm output in India, it seems. Finance Ministry बोल रही है। Finance Ministry बोल रही है कि India to focus more on services sector than on the farm sector or manufacturing sector this financial year, it seems. India has abstained from UN General Assembly resolution underscoring need for peace in Ukraine. इंडिया ने abstain किया है इस केस में। very shameful actually, because obviously Russia is one of the countries that we support a lot. India is among the 32 countries that abstained from the vote. वोट में abstain किया है, but they said underscored the need to reach as soon as possible a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine. ये होनी चाहिए ऐसा इंडिया ने बोला है, but India has abstained from having any peace in Ukraine. The resolution, which got 141 votes in favor and 7 against, underscores the need to reach as soon as possible a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine, in light with the principles of the Charter of the United Nations. The MCD administration has put the lives of 2 innocent children at stake, sealed a building in Kanna Vihar Part 5 of the Aman Vihar area with 2 children inside for non-payment of house tax. Very good here. हाँ, क्रिकेट प्रेमी भाजपा के पप्पू कहे जाने वाले संसद के चमचे हजार रुपए लेकर अपने कार्ड पर स्टेडियम में करा रहे हैं अवैध एंट्री। पुलिस ने पकड़कर कार्रवाई के लिए डीडीसीए को सौंपा। संसद के दलाल पीए ने कराया सेटलमेंट। दोनों आरोपी G10T दिल्ली भाजपा कमेटी के सदस्य भी है। वंडरफुल। India's potential in green energy no less than a gold mine on oil field, PM बोल रहा है। ये स्टैंडिंग कमिटी का इलेक्शंस चल रहा है एमसीडी में, which is looking now the next flashpoint between BJP and Aam Aadmi Party. It seems that standing committee election is a very huge election for MCD, it seems. बहुत सारे big decisions will be taken up by the standing committee. So दोनों दलों क्यों चाहते हैं कि स्थायी समिति पर कब्जा करें, इसके बारे में एक आर्टिकल आया है मिलेनियम पोस्ट में, you can read about it.
इट सीम्स एमसीडी में 18 डिफरेंट टैक्सेस को ये स्टैंडिंग कमिटी डिसाइड करती है एंड आल्सो इफ एट ऑल एनी एक्शन हैज टू बी टेकन फर्स्ट रिजल्ट मेयर के बाद स्टैंडिंग कमिटी लेती है. Government making concerted efforts to strengthen trade ties between Punjab and Japan. Minister Aman Arora growth बोल रहे हैं goods worth rupees 336 crore are exported from Punjab to Japan, it seems. Deputy CM Manish Sisodia writes to LG again, seeks approval of proposal to send teachers to Finland. Aam Aadmi Party ka Jasmine Shah has been summoned by ED in Delhi liquor policy case. Earlier the day, ED summoned Delhi CM Arvind Kejriwal's personal assistant Bibhav Kumar for questioning in connection with the liquor policy case. Delhi Teachers University signs memorandum of understanding with University of Birmingham to promote curriculum development and research. From the online employment portal of Delhi government, as of 23rd February 2023, total registrations 15 lakh 89,867. Today's registrations are 84. Today's update registrations 104. Today's candidate log hits 1150. 1150. NHRC taking a sumo to cognizance sends notice to Delhi government MCD and DJP over reported inaction in the complaints of overflowing choked sewer lines and contaminated water in Vishnu Garden area, quoting Article 19. NHRC ने इसके ऊपर रिपोर्ट ले लिया है, बट NHRC को किसी ने रिपोर्ट भेजा है कि एक वीडियो परपेचुअली बहुत चल रही है, वायरल चल रही है, जहां पे बहुत सारे मोनू मनेसर हरियाणा में ये जो काउ विजिलेंटिज्म के जरिए लोगों को मारा दिया जा रहा है, उसमें एक वीडियो वायरल चल रहा है जहां पे बोला जा रहा है कि विल किल द काउ स्मगलर्स एंड आल्सो कट देम अलाइव. Bharatpur police should take notice of this open death threat by Monu Manesar and investigate his involvement in the murder of Junaid and Nasir from all possible angles. ये वीडियो बहुत वायरल चल रहा है. इसके बारे में NHRC said no comment. Punjab cabinet to meet on February 28 to बहुत सारे major decisions will take place. And on top of that, पंजाब का गवर्नर बोल रहे हैं कि until the legal action has been taken, he will make sure that the budget session will not happen in Punjab. He is very much upset that Bhagwant Mann ने बोला है कि we are answerable to the people of Punjab, not to some elected official. इसके लिए he is very unhappy. पंजाब का गवर्नर बोल रहा है कि बजट सेशन कैसा होगा मैं देखूंगा. That's what he's saying. पंजाब का सीएम बोल रहे हैं कि become partners of socio-economic growth in state. CM to industrial tycoons rolls red carpet for the captains of industry to invest in best, reiterates commitment to make Punjab industrial hub in the country, bats for employment to local youth in upcoming projects. Punjab has received more than 40,000 crores worth of investments from Tata Steel, Nestle, Frodenberg, Cargill, Hindustan Unilever, Sanatan Textiles, and others since March 2022, hereby generating around 2.5 lakh employment opportunities. 2 days, 5th edition of Progressive Punjab Summit begins with fanfare. As I told you, Punjab governor बोल रहा है कि will take decision on budget session only after legal advice on PCM Man's derogatory tweet and letter. संदीप पाठक बोल रहे हैं कि केजरीवाल will visit every division of the state, Rajasthan, and the organization will reach villages in 1.5 months. संदीप पाठक बोल रहे हैं. हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट आया है कि inflation has emerged as a much bigger problem than low growth thanks to economic sanctions imposed on Russia and the disruptions to the supply chains due to war. There has been massive inflationary spike in the last year. इसमें ये बोला जा रहा है कि OECD का डेटा दिया जा रहा है कि HICP एनर्जी एंड HICP
HICP Energy, um, harmonized index of consumer prices. अगर देखा जाए तो HICP Energy and HICP Total has spiked जनवरी टू 1997 से लेके अभी तक अगर देखा जाए, दिस इज द हाईएस्ट इट सीम्स इन इंडिया। इंडिया में पहली बार इतना स्पाइक देखा गया है इन टर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशन। Inflation. Harjot Singh Bens, Punjab ka took note of not allowing students to sit on in ensuing exams of classes 5th, 8th, 10th and 12th of Punjab School Education Board due to some fee issues. These exams are to be conducted for the said classes in February, March 2022. The war's impact on economic growth, it seems. Hindustan Times में एक और आर्टिकल है, January 2022 edition of IMF's WEO expected global GDP to grow at 4.4% and 3.8% in 2022-2023 respectively. But interestingly, ये numbers झूठ निकला है, और you can say it didn't actually the IMF की प्रेडिक्शन के हिसाब से वो चला नहीं है। These numbers are brought down to 3.4, 4.4% से 3.4% गिर गया है, 3.8% से 2.9% गिर गया है। IMF ने अपने रिपोर्ट में ये भी बोला है कि परसेंटेज चेंज इन ग्रोथ प्रोजेक्शंस बिटवीन जनवरी 2023 WEO एंड जैन 2022 WEO में जनवरी 2022 में 22.7% ग्रोथ एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, और 2023 में 23.7 हो रहा था, ऑलमोस्ट 1% एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और इकोनॉमीज में 2022 में 30.8% कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, और वो 2023 में 53.8% कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और यूनाइटेड स्टेट्स में कॉन्ट्रैक्शन 50% हो रहा था 2022 में, अभी वो 46.2% हो रहा है, कम हो रहा है। यूरोजोन में 10.3% कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था 2022 में, अभी वो 72% कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इमर्जिंग मार्केट्स में 18.8% कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था 2022 में, अभी वो 21.2% कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद नाटो में एक्सपेंडिचर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज लेसर देन इन गल्फ वॉर इट सीम्स। Data from the NATO states shows an absolute raise in the military expenditure of all G7 except France in 2022 from 2021. Based on the historical data from the World Bank, it is possible to make a long-term comparison of military spending as shares of GDP. The current military spending of most G7 nations remain lower than what it was during the Gulf War, but marginally higher than the two wars fought in Afghanistan and Syria and Iraq. Russia's military expenditure, meanwhile, showed the same trend. To be sure, United States and the United Kingdom spent 3.3% and 2.3% of the GDP in their military in 2022, lower than the Gulf War and the two wars in Afghanistan. So the anniversary of the war has seen the US president making an unscheduled trip to Ukraine, and Russian president castigating the West in an address and threatening to exit a key arms control treaty. The recent poll conducted by the European Council on Foreign Relations (ECFR) shows that public opinion around the war is very different across nations. While a vast majority of non-Western countries are tilted in favor of Russia, 77% of the British, 71% of the Americans, and 65% of the Europeans are united in believing that Russia is an adversary or a rival.
India, the poll shows, is among the countries was the most favorable disposition for Russia, it seems. चाइना बोल रही है कि it is keen on resolving border standoff at earliest, says China. हरियाणा का बजट रिलीज हो गया है. सोशल सिक्योरिटी पेंशन अप टू ₹2500 सॉरी ₹2500 पर मंथ दिया जा रहा है. वो दिया जा रहा था पहले, उसको 2750 कर दिया है अभी. एड फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स 200 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड डाला है. रिक्रूटमेंट ऑफ 65,000 रेगुलर पोस्ट इन गवर्नमेंट सेक्टर, इट सीम्स हरियाणा करेगी अभी. ₹1,000 per ton incentive for buying straw from farmers, it seems. और गौ विजिलेंटिज्म, गौ सेवा आयोग के लिए 400 करोड़ डाला गया है हरियाणा के बजट में. डेप्ट टू टच 2.85 लाख करोड़, इट सीम्स. 1.83 लाख करोड़ बजट दिया गया है फॉर बजट 2023-2024. 11.6% hike from 2022 to 2023. Revenue deficit 16,949 crores. The fiscal deficit 33,274 crores. Debt by year end होगा 2.85 crores होगा. Debt to GSDP ratio is 25.78%. 10-fold हाइक किया है गौ सेवा आयोग के लिए टू गेट 400 crores. फिर इसके बाद 101 crores फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सतलज यमुना लिंक कैनाल. 50 crores फॉर एडिशनल premises फॉर विधानसभा कॉम्प्लेक्स. एज लिमिट फॉर 50% कंसेशनल बस फेयर कट फ्रॉम 65 to 60. Care home from 3,600 persons above 80. 700 bed hospital in Gurugram. Sports academy in Panchkula, Ambala. Cycling velodrome in Kurukshetra. Water sports center in Karnal. And insurance for injured sports persons, it seems. ये सब चीजें हमारे अब हरियाणा की बजट में बोला गया है. बतंडा एमएलए को 4 days रोड कस्टडी में दे दिए गए हैं. इसके बतंडा एमएलए का अरेस्ट का वारंट हैज बीन गिवन इन आवर्स आफ्टर भगवंत मान's अप्रूवल. आम आदमी पार्टी का ही एमएलए है वो. उसको पंजाब के विजिलेंस ने अमृतसर दिल्ली की हाईवे में उसको पकड़ा गया है. वेरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसको 3 दिन पहले ही पार्टी ने बोला है कि एंटी करप्शन के खिलाफ कोई भी काम करेगा उसका सख्त कार्रवाई होगा. एंड ही वाज टोल्ड टू टॉ द पार्टी लाइन, बट बंदे ने सुना नहीं है. एंड ही इज नाउ बीन अरेस्टेड. मोर जापानीज फर्म्स में इन्वेस्ट इन पंजाब. गुजरात में पेपर लीक के खिलाफ एक लॉ लेके आ रही है गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट. अभी भी इसका पूरा डेटा मुझे पता नहीं है, बट लॉ लेके आ रही है. लेट्स सी उसमें लॉ में क्या क्या लिखा हुआ है. व्हाट आर दे थिंकिंग ऑफ डूइंग इट. Okay, fine. Agri department set to target to sow millets in 5,000 acres in Punjab. 108 teachers to get a क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले अवार्ड. महाराष्ट्र से ये पूरा एक छोटी सी न्यूज है. And it seems Anganwadi workers protest near homes of 3 MPs in Kolhapur, Aurangabad और मुंबई. हर जगह पे आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं. Radical preacher Amritpal Singh के supporters clash with police in Anjala.
इसका आंसर देते हुए पंजाब का गवर्नर ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज बिकमिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज बिकमिंग आउट ऑफ हैंड। और पंजाब का पूर्व सीएम मिस्टर अमरिंदर सिंह भी बोल रहे हैं कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज वेरी बैड। ये ये अंजला में अमृतपाल सिंह के सपोर्टर्स हैव अटैक्ड द पुलिस स्टेशन। बीजेपी जोनल मीट इन लुधियाना टू डिस्कस पोल preparations soon. CM directs officials to Punjab CM Bhagwant Mann directs officials to monitor development in border villages. Death toll from Turkey जो earthquake हुआ है सीरिया टर्की में has tops 47,000 officially. Over 31,500 refugees near Myanmar, Bangladesh took shelter in Mizoram. Officially ये बोला जा रहा है. We deserve credit for bringing toughest anti-copying laws in the country. उत्तराखंड का सीएम धामी बोल रहा है. Municipal Corporation of Delhi Secretary recommends fresh standing committee elections. ED quizzes CM Kejriwal's aid in Delhi excess policy. नवी मुंबई में वेरी इंटरेस्टिंग ये है कि इंडियन रेलवेज हैव नियरली डबल्ड इट्स रेवेन्यू फ्रॉम टिकट कैंसलेशन चार्जेस between May 2014 and March 2022. The Indian Railway had collected 927 crores in 2014-2015 because of ticket collections, which shot up to 1600 crores till March 2022, revealed an RTI information provided to an activist by the Indian Railways. Highest collection of rupees 265 crores was reported in 2018-2019 financial year. Under the revised refund rules effective November 12, 2015, cancellation charges were doubled, it seems. फिर इसके बाद सुकेश चंद्रशेखर का जो सेल है ना, उसका जो वीडियो है रेड का, सेल रेड का लीक हो गया है. वो लीक हुआ है, इसके लिए अभी जेल अथॉरिटीज हैव ऑर्डर्ड प्रोब. आपको पहले पता होगा कि इससे पहले मिस्टर सत्येंद्र जैन का सेल का भी लीक के बारे में जेल अथॉरिटीज ने और प्रोब ने ऑर्डर किया था, बट अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है. बट अभी ये सुकेश का इन वॉर फुटिंग अभी प्रोब ऑर्डर कर दिया है. ऑब्वियसली जो देना था, दिखाना था, वो दिखाया नहीं इन्होंने, इसलिए होगा. Hindenburg report followed. First time value of LIC holding in Adani companies drops below purchase price, it seems, इंडिया में. फिर इसके बाद इंडिया की फर्स्ट इन द फर्स्ट टाइम इट इज इन द फर्स्ट टाइम इंडिया की सबमरीन हैज डॉक्ड इन इंडोनेशिया एज पार्ट ऑफ द SCS कॉन्फ्लिक्ट को देखा जाए देख के. Okay, so the next thing is in Pol Pot, Nagaland, higher child malnutrition in 2019-2022, 2019-2020 compared to 2015-2016. Fewer schools have functional toilets, but more have drinking water facilities, shows data from Pol Pot state. Child nutrition in Nagaland from 2005 to 2019-2020 का पूरा डेटा अगर देखा जाए तो इट सीम्स NFHS 2019-2021 में 32.7% are malnutrition, are stunted children under 5 years. Percentage of wasted children under 5 years 26.9% है,
वो पहले 16.7% होता था 2015-2016 में, अभी वो 26.9% हो गया। अंडर वेट चिल्ड्रन 11.3% होता था 2015 में, अभी वो 19.1% हो गया। बेटर एक्सेस टू मैटरनल हेल्थ केयर इन नागालैंड ओवर द 15 ईयर्स, वो भी इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज ऑफ बर्थ अटेंडेड टू बाय स्किल्ड हेल्थ पर्सनल, वो अभी 55.3% हो गया। और फिर नागालैंड में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER इन नागालैंड हैज इंप्रूव्ड सिंस 2018-2019 फॉर ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन एक्सेप्ट अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी में पहले 70.9% होता था, अभी वो 68.9% हो गया है। When the percentage of schools with functional electricity and drinking water facilities is improved in Nagaland, the percentage of schools with functional boys or girls toilet reduced from 2018 to 2022. It seems that electricity 63.5% 2018 में होता था, अभी अभी वो 67.1% है, 4% कुछ बड़ा है। फिर इसके बाद ड्रिंकिंग वाटर 59.23% होता था 2018 में, अभी वो 60.6% है। बॉयज टॉयलेट 87.85% होता था पहले 2018 में, अभी वो 76.3% है, वो ऑलमोस्ट 11% गिरा है बॉयज टॉयलेट। गर्ल्स टॉयलेट 88.2% होता था 2018 में, अभी वो 77% है, ऑलमोस्ट 11% गिरा है वो भी। फिर इसके बाद हैंड वॉश फैसिलिटी 45.54% होता था 2018 में, अभी वो 60.5% है। टोटल क्राइम्स, वायलेंट क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन नागालैंड में और भी बड़ा है, इट सीम्स दी 33% बड़ा है। दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम नागालैंड। ओके, अक्षय कुमार इज गोइंग टू रेनाउंस हिज कैनेडियन पासपोर्ट, ऐसा बोल रहे हैं। Amit Shah is saying that Congress pursues dynastic politics and BJP best suited for India, it seems. वो बोल रहा है। 1 month on, Adani's mid-cap loss at $142 billion. Some stocks still stuck at lower circuit, it seems. Uh, So investments by state governments अगर देखा जाए तो it seems that कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में सबसे ज्यादा कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट करने वाले कंट्री स्टेट इन इंडिया 57,286 करोर्स इन कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में महाराष्ट्र ने किया है। उत्तर प्रदेश ने 4,194 करोड़ किया है। उड़ीसा ने 15,621 करोड़ किया है। वेस्ट बंगाल में 10,880 करोड़ किया है। पंजाब ने 6,342 करोड़ किया है। गारंटी रिडम्पशन फंड GRF में पंजाब ने 0 करोड़ किया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 0 करोड़ किया है। ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स ATBs में 0 करोड़ किया है पंजाब ने। सो गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल्स ओनरशिप पैटर्न ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज में कमर्शियल बैंक्स में 38.28% तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना सिक्योरिटीज डिपॉजिट किया है, which is almost equal to 90,98,788 crores गवर्नमेंट ने किया है पूरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फिर इसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज में 25.94% रखा है।
फिर उसके बाद आरबीआई पे ऊपर 15.28% रखा है। And now look at state governments, 45 lakh 89,128 crores स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ने रखा है। इसमें कमर्शियल बैंक्स के ऊपर 34%, 34.37% है, और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर 27.271% है। एंड देन प्रोविडेंट फंड्स के ऊपर 20.18% रखा है। आरबीआई के ऊपर 0.79% ही रखा है गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट में, आई मीन। ओके। हाँ, मार्केट बोरोइंग्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स अगर देखा जाए, टोटल अमाउंट रेज्ड सो फार इन 2022 2023, अभी तक अगर देखा जाए ग्रॉस जो भी इनकम स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी तक बारो किया है, आंध्र प्रदेश 45,000 करोड़ बारो किया है। फिर इसके बाद बिहार ने 25,000 करोड़ बारो किया है, एंड गुजरात ने 26,000 करोड़, हरियाणा ने 28,000 करोड़, कर्नाटका ने 32,000 करोड़, फिर इसके बाद महाराष्ट्र ने 45,000 करोड़, केरला 16,936 करोड़, मध्य प्रदेश 12,000 करोड़, फिर इसके बाद पंजाब ने 31,900 करोड़, पंजाब ने 31,900 करोड़, फिर उसके बाद राजस्थान ने 29,000 करोड़, तमिलनाडु ने 49,000 करोड़, तेलंगाना ने 28,000 करोड़, और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़, और वेस्ट बंगाल ने 37,000 करोड़ उन्होंने रेज किया है मार्केट से। प्रिंट ने टॉक्सिक दिल्ली इज टर्निंग इनटू सिटी ऑफ लाइक्स नाम की एक आर्टिकल डाला है। इफ यू गेट सम टाइम प्लीज रीड थ्रू दैट आर्टिकल, इट इज वंडरफुल, इट इज रियली गुड इट सीम्स। Okay, so these are some news which I have. Anybody wants to add anything? Anything anybody wants to talk? नहीं हुआ, आज होने वाला है 10 o'clock आई थिंक सो। अभी नहीं किया है, कर रहा हूँ। Yeah, I just wanted, anybody has any news or anything they want to add?